फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to the CricketNext YouTube channel, and finally the second test of the 5-match test series that both the teams India and England are playing is over. India has won the second test and both the teams will be going to Rajkot 1-1 each. और काफी टाइम से यही वेट था. England won the first test in Hyderabad. They were looking good and India had to answer a lot of questions, and finally they have answered. While there are some more questions that have been raised throughout the match. काफी कुछ हुआ इस मैच में. आज के दिन काफी कुछ हुआ, पिछले सेशन में काफी कुछ हुआ, और उस सब में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं जेमी ऑल्टर, सौम्य कपूर एंड ताउस रिजवी, एंड we'll go into the detail of the match, of the day, of the session. क्या क्या हुआ. I'll start with this session, then we'll slowly cover the match. Jamie, we talked about this session के इस अगले सेशन तक मैच जाएगा कि नहीं. टाइम के हिसाब से तो गया, बिकॉज एकदम टी के मोमेंट पे आखिरी विकेट आई. बट बेन स्टोक्स, a lot has been said about Ben Stokes. जो जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली, we all knew कि वो धीरे स्टार्ट करेंगे, लेकिन it looked like he went into a shell, and the way he got out. Okay, it's okay, you get run out, it's cricket, run out हो जाते हैं, but the approach he took while taking the run, आपने start एक jog कर लिया, and then you didn't realize कि maybe there could be a direct hit and you can be in danger. How do you see Ben Stokes' innings and then the way he got out? इनिंग्स वाज जस्ट लाइक ही ऑलवेज प्लेज, लाइक वी डिस्कस ना शो पे कि ये जब 7 विकेट गिरता है तो असली बेन स्टोक्स दिखने को मिलता है, तो वो पार्ट बिल्कुल ठीक था. दे हैड, इसके बाद एक और दिन था, बट द डिसमिसल वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच. वी ऑल डिस्कस दिस कि जब तक साला वो है, मतलब 2% चांस भी हो है तो 2%. सो वेरी कैजुअल, बिकॉज बेन फोक्स बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था. यू नो, वी डिस्कस, सौम्या सर के कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको भी हल्के में लेते हैं. सो गिवन द सिचुएशन, गिवन दैट ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू स्ट्रगल टू ओवरऑल 399, बट यार यू आर बेन स्टोक्स, सो दैट कैजुअल डिसमिस. देखो थ्रो क्या है, थ्रो लग सकता है, लग सकता नहीं है. दैट्स जस्ट दैट्स योर डे. यू नो, लाइक श्रेयस अय्यर टुक अ ब्रिलियंट कैच, बेन स्टोक्स टुक अ ब्रिलियंट कैच, और अय्यर ने कमाल का वो थ्रो मारा. बट दीज थिंग्स आर वेरी रेयर. Ben Stokes doing that was surprising. So पता नहीं, शायद वो एक सेकंड के लिए मेंटली ऑफ थे. Maybe he didn't want the single, जो भी है, but the way he took off, I don't think we'll ever see Ben Stokes do that again, because that was very, very surprising. As good as Bumrah was, as good as Ashwin was, उसका जो एक मेंटल क्या बोलते, क्या था वो, ब्रेन फेड मोमेंट, मेरे हिसाब से मैच वहां पे एक्चुअली यू नो कि अब कोई चांस नहीं है. Yeah, and Soumya, okay, it's okay कि we know Ben Stokes starts slow, उनको वो धीरे से start करते हैं. He takes it, especially जब tail ender आते हैं, he gets into his zone and he plays his shots. But जब आपकी पूरी टीम पीछे तेज रन मार रही है and you can see the target कि आप chase कर सकते हैं, there's a possibility. Shell में जाना, how bad is it for the team? Ben Stokes जिस तरीके के रन रेट जितना कम हो गया था, does it add pressure? And also his dismissal, what's your take on his dismissal? No, I guess, shell में जाना ठीक नहीं होता, but again, that's how he starts his innings, and कहीं ना कहीं folks positive दिख रहे थे, ऐसी बात नहीं है. तो I feel that wasn't something कि कुछ उन्होंने कुछ अलग नहीं करा. That's okay. You had almost 5 sessions, including the tomorrow 3 sessions as well. So वो कहीं ना कहीं आप अपना time ले सकते थे, but yeah, the approach during the run was a bit lazy, I would say. Lazy भी नहीं, actually वो yes no जो एक fraction of second का yes or no हुआ, उसमें एक थोड़ा सा वो miss out कर गए. Plus I feel he could have put in that dive, तो probably शायद save हो सकते थे. And it was a good throw from Shreyas as well. He made his presence felt in the field finally. So एक important catch लिया, एक important run out लिया. So yeah, and it was probably the most important one for Team India. So yeah, he contributed a lot in the field for the Indian team. But yes, Stokes का wicket वो बहुत ज़रूरी था, जिस time पे आया वो बहुत ज़रूरी था, because if you see Hartley as well, he was looking very positive. So 3 players, I mean, they could have taken this game possibly away with the kind of caliber that Ben Stokes and the kind of mind setup he possesses. So yeah, it was, whether he was lazy, whether he was not in that zone, or he was into that shell, that has just worked for India. And yes, kudos to Shreyas Iyer as well for that kind of a throw. Yeah, and Taus,
your take on the third session about. We also have Taos. I'll come to you. We also have Network 18 Group Sports editor K. Srinivas Rao with us. Srini, 1-1 going to Rajkot, and finally India has equaled the baseball thing. And what's your take on the match, on the session, the way England played? They were now 100 runs short, 106 run से match हारे हैं. Your take on this session and India's performance? Well, I'd say congratulations to Jimmy Anderson because I think he said right that they'll wrap the game before 70 overs. He's lived up to. Yeah. So that's it. The match. This game, for the win, for the all important win that levels the series, for single-handedly bringing India back into the series, for allowing them with a chance to now actually dominate from here going forward, and to kind of be in control of the script that's going to be laid down for the remaining part. The credit goes only to one man, single-handedly to one man, and that's Jasprit Bumrah. That spell, the 26th over and the 28th over of England's first innings, especially the Yorker, that set the fear back in the hearts and minds of the English batters. For that one delivery alone, for that one spell alone, every bit of credit in this test match goes to him. And that's about it. That's the one confusion I have. Yeah, and see, Srini, I'll come to Bumrah की हम बात करें, the way he bowled, he is a great asset for the team. But how will you manage him now in the upcoming matches? Oh, yes, there is a 10-day gap between the two tests, the second test and the third test. You have few days, but how will you manage Bumrah's workload going forward? Now he's a great asset, but we all know that he can't play 5 matches on a trot. It will be too much for the likes of Jasprit Bumrah. So, I agree what's your with you. take on Bumrah and his workload? I agree with you. That is where I draw certain experiences. I have as a reporter when I was reporting test matches when Ravi Shastri and Bharat Arun were in charge of the coaching department. One thing I learned, the most important thing I learned at this level is trust. Where Jasprit Bumrah can speak his heart out to someone in the team management and share as to how he's feeling, what is his body telling him. There's nobody who understands one's own body than the individual himself, right? So in this case, it is Bumrah. He needs to listen to what his body is telling him. He's matured enough, he's old enough to understand. He's playing at the highest level, and having played this far, the experience alone should be telling him, what exactly is he feeling like, and can he give himself another go, or needs to take a break and then come back again. Nobody better than him to judge this. But the question is, in this team management, who does he share with? Does he have the kind of rapport that it takes to, sit down with Paras Mambre and help him understand, or, what he's going through? So it'll all depend on that. Workload management as a scientific term, as a technical term, doesn't really mean anything if you can't really have a heart-to-heart chat with, somebody in your team. So whether it's Rohit, whether it's Rahul, or whether it's Paras, it's what it will take is probably to sit down and have that conversation. And as far as India's own needs are concerned, well, I mean, one may just want Jasprit to continue because you want that rhythm, you want that pace, you want that confidence to continue with you in the following test match because you want to like kind of not stop from here. And so one will you look at it from Rohit's point of view. Rohit will want Jasprit, right? So Jasprit has to take that call and be vocal about it, and then it's for the team management to understand what he's saying. So it's all about understanding each other. Yeah. Taos, we'll come to you. India's ball, the way they defended 399, although at one point of time, it was, as Gill also said, that they'll give 30% to England. They did really well on the field. There were certain changes on the field, in the field also by Rohit Sharma. How do you see India's second innings bowling? I mean, the way they came back, yeah, second inning, first inning, of course, Jasprit Bumrah, but this time it was a collective effort, R. Ashwin. एंड सुबह में जो मैच लंच सेशन में जब आप बात कर रहे थे कि भाई कब खत्म होना चाहिए मैच, तो कह दिया था हमने कि भाई टी के पहले ही हो जाएगा और हो गया कनफ. तो अगेन एक और क्रेडिट दे दो. और दूसरा
दूसरा, yeah, I mean it's a collective effort. This was very important for Ashwin as well. बुमराह तो काम करते चले हैं यार. He's done magical and I'm worried that वर्कलोड मैनेजमेंट में अगर आपने वर्कलोड मैनेज कर लिया और बुमराह को 2-3 मैच मिस करा दिए या एक मैच और मिस करा दिया तो कौन रिप्लेस करेगा वो बंदे को? बिकॉज मैं आई हैव नो फेथ इन सिराज कमिंग एंड विनिंग यू मैचेस लाइक बुमराह. और मुकेश कुमार तो छोड़ दो, उनकी दूर की बात है, और मे बी एन आवेश खान, क्योंकि आपको एक ही सीमर पे जाना है और वो सीमर जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर इसलिए होते थे बिकॉज ही इज अ मैच विनर. नहीं तो अगर ऐसा वैसा सीमर होता कोई भी इफ नॉट मैच विनर तो आप सिराज से भी करा सकते थे, मुकेश कुमार से भी करा सकते थे नेक्स्ट मैच में. But then this guy plays a very important role and now that we are eyeing the WTC points और यहाँ पर हमने कम बैक किया है तो we cannot let it lose. तो yeah, agree with श्रीनी भाई की मतलब कैसे exactly जाना है जसप्रीत बुमराह को लेकर. It's very very important and you have to play him all the matches if you want to win. आप IPL से ब्रेक दे दो अगर थोड़ा सा शुरुआत में, बट ये मैच, ये 3 मैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुमराह का. अदरवाइज सी लुक एट अश्विन, आई मीन he was not convincing in this game. 500 के 499 हो गए, एक 500 मुझे लग रहा था फर्स्ट 2 मैचेस में हो जाएंगे. he would have crossed that 500 wicket mark, मगर अभी तक नहीं हुए. So there is doubt, there are doubts, but then वो doubts आपको आगे तक मिलने वाले. अगर बुमराह नहीं रहेंगे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा बहुत ज्यादा मैसिवली. और राइट नाउ आई एम लुकिंग एट द मैन ऑफ द मैच, हु इज गोना गेट जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल. दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यार, क्योंकि बुमराह डिजर्व्स इट एज वेल एज यशस्वी जायसवाल. अगर यशस्वी जायसवाल का वो मैसिव वो इंपॉर्टेंट नॉक नहीं आता तो हम मैच में नहीं होते, और जसप्रीत बुमराह का अगर ये बर्स्ट नहीं होता 6 विकेट का तो भी हम मैच में नहीं होते. So these 2 important knocks. So yeah, this bowling was very very crucial. I mean आ गया था, मोमेंट था हमारा जीतने का, और यहाँ से अगर हम जीतते नहीं, जिस तरह से शुरुआत दी थी आज 6 विकेट फर्स्ट सेशन में, 4 विकेट बाद में, ये स्टिल ऑन दिस काइंड ऑफ अ विकेट where it was not turning viciously, it was a quite a flat deck, easy to bat on. Kudos to Team India the way they bounced back, but then काम अभी बहुत लंबा बाकी है, I would say. Yeah. And Jamie, what are your key takeaways from the match? अगर हम चारों दिन का गेम देखें इंडिया के नजरिए से, what do you think are the positive key takeaways that India will take forward into the third test? Just these 2 things that Tosbai was saying. Shubman Gill getting 209 out of a total of 396. It speaks of the individual brilliance and the collective failure of the other 9 people. And look, I mean, we've discussed this so often कि अब मेरे ख्याल से अब तो सवाल पूछना बनता है कि क्या स्पिनर्स सिर्फ टर्निंग ट्रैक्स पे चलेंगे. अब look, these are, to my mind, these are the best 2 test wickets I've seen since, like we discussed, I think मैच के एक दिन पहले 2019 यानी कि WTC के बाद शुरुआत में या उससे पहले these tracks were common. India would win on day 4, but mostly they win on day 5. Virat would get double hundreds, Mayank would get double hundreds, Rohit would get 200s in one match, Pujara, सारे बैट्समैन, मतलब जो हमारे फैंस हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल बैटिंग देखने के लिए आते हैं, उनके लिए सब कुछ था, राइट. डबल हंड्रेड्स. जिनको फास्ट बॉलिंग में शौक है उसमें मोहम्मद शमी के 5 विकेट थे, कभी कभार ईशांत के थे, और जो स्पिन बॉलिंग में रुचि रखते हैं उसमें तो हर दूसरे मैच में अश्विन was getting 5 wickets, Jaddu 5. Then suddenly this whole ranked turners thing came, right? Now, full credit. I mean, I agree with Osbai. It's a toss-up. I would go for Bumrah because of what he's gone through in life, to come back from a year away, to bowl on these kind of tracks, to turn the match with 6 wickets. वैसे ही बैट्समैन का गेम है, जायसवाल को बहुत चांसेस मिलेंगे. बुमराह को वर्कलोड देख के या रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के या तीनों फॉर्मेट्स को देख के he's not going to get much better day. So I would want to see it come to him. So these are my 2 takeaways. Maybe जैसे हमने कल बात किया, शुभमन गिल का काफी अनकन्विंसिंग सॉस है, टीम को कॉन्फिडेंस मिले, बट लाइक वी डिस्कस्ड यस्टरडे, काम बहुत बाकी करना पड़ेगा उस लड़के को. आई एम स्टिल नॉट इम्प्रेस्ड विद रोहित शर्मा's captaincy. We discussed this 2 hours ago. Fantastic that India won this match. They were in the driver's seat. So positive number 1 in terms of how it panned out. Jaiswal's brilliant match, I would say match setting 200. Number 2, Jasprit Bumrah's match winning 6 wicket haul. और आज भी यार, he looked by far the best bowler, you know. So, but again, if India have leveled the series, by and large, 3 बंदे के performance में, I think we know कि बहुत problems हैं इस टीम में अभी.
Yeah, Soumya, talking about Ravichandran Ashwin, 3 wickets in this match, wicketless in the first innings. As Jamie said, can they only bowl on spinning wickets? Ashwin, we all know, yeah, for 499 wickets, that says something about a bowler. He is an exceptional bowler, but in this match, he has not been that up to the mark, so to say. What's your take on Ashwin and his performance in this match? First of all, I'll have a take on the India takeaways from on the takeaways from this game as well. There are certainly no takeaways. आपको सिर्फ विन दिखाई दे रहा है 106 रन का. रीजन बीइंग वी हैव सीन बुमराह डूइंग दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स. ये बहुत बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था, लेकिन ये नया नहीं है. ही हैज अ हैबिट ऑफ इट. जायसवाल से वो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं. जायसवाल प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, ओके, यस अ पॉजिटिव ऑफ कोर्स, बट एक बहुत अच्छा नॉक था वो. उसके अलावा वी आर ऑल एट सी. आप कैप्टेंसी ले लो, आप बैटिंग ले लो, आप बॉलिंग ले लो. आई मीन मुकेश कुमार इनिशियली बोल्स 2 overs, गिव्स अवे 19 रन्स. 19 रन. आप टी20 थोड़ी खेल रहे हो यार. अक्षर पटेल had an economy of 5.2 if I'm not mistaken initially. Yeah, 5.4. He eventually ended up with 5.4. I mean, look at this. And अश्विन की जहाँ तक बात है, I always believe that bowling में भी partnerships होती हैं. If he and Kuldeep probably would have bowled initially ज़्यादा in tandem, शायद वो विकेट्स कॉलम थोड़ा सा और बढ़ जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुलदीप प्रेशर क्रिएट कर सकता है ज़्यादा. 15 ओवर डालना, आई मीन आई डोंट रियली फाइंड इट वेरी राइट ऑन रोहित शर्मा पार्ट. कुलदीप, और हमने पहले बात भी करी थी, कुलदीप ने आई गेस 4 ओवर डाले थे पहले सेशन में इनिशियली. उसके बाद इस सेशन में उन्होंने थोड़े से ओवर्स डाले. तो यस, बुमराह played really well, bowled really well. Jaiswal played a brilliant knock. Gill got 100, good, but there are hell lot of questions that needs to be asked, and I don't understand what kind of a captaincy was that. I mean, 8 wickets. You have 8 wickets down of the opposition. तुम्हारे tail end, उनके tail enders बाहर हैं, and you have just one slip for a spinner and a short leg. और short leg भी ऐसे खड़ा है जैसे वो बॉल से उसको डर लगता है. नो सिली पॉइंट, नो सेकंड स्लिप, नो गली लेग स्लिप, नो मिड ऑन मिड ऑफ. आपने मिड ऑन मिड ऑफ खोला हुआ है. लॉन्ग ऑफ प्लेस पे आपके इतनी इजी सिंगल्स दे रहे हो आप हार्टले को. ऑब्वियसली ही कांट गिव यू अ 90 रन का नॉक. ऑफ कोर्स ही शुडंट डू दैट, क्योंकि वो और क्वेश्चन रेज कर देगा. बट सीरियसली आप इतने इजी रन दे रहे हो. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, ये अंदर से मैसेज आता है या ये बाहर से मैसेजेस खराब क्या है, क्या कम्युनिकेशन गैप है, आई डोंट नो. एंड टॉकिंग अबाउट अश्विन अगेन, he is someone who will who will pick up wickets. वो एक ऑफ डे होता है, ठीक है. एंड ऐसा नहीं है कि स्पिनर वो सिर्फ टर्निंग ट्रैक्स पे विकेट लेते. ही हैज बीन अमंग, ऐसे ही नहीं यार, ऑलमोस्ट 500 विकेट्स लिए. या ही हैड एन ऑफ डे. ऑफ कोर्स आई वुड से दैट वाज एन ऑफ डे, बट आई विल आल्सो से कि अगर कुलदीप और इनको टैंडम में थोड़ा ज्यादा बॉल कराया जाता तो शायद प्रेशर क्रिएट ज्यादा होता. ही कुड हैव picked up a wicket or two more. That's my take on it. Yeah, yeah. Shrimi, I'll come to the wickets now. दो मैच में जिस तरह की विकेट्स हमने देखी, it was not the typical rank turner that we have been seeing over the last years. Do you think these are the kind of pitches that India should stick with going forward in the series in Rajkot, in Ranchi, or in Dharamshala, or do you see any changes happening in the pitches going forward? I think this is something we discussed in the show, I think, day before this conversation came up. Spotting in quotes, spotting wicket in quotes. Do we have a choice? Do we have a choice? Why did we not go for a rank turn? Whether it is Hyderabad or whether it is Visakhapatnam, and I see the same being the case for the third test. That we will not go in for a rank turn. The reason is very clear. Who in this batting order is going to stand there and put the runs on board? आपको आज, as Jamie mentioned a while back, the guy put 200 runs, Yashasvi, because of which, you were anywhere, you had an opportunity to do anything in this game. You remove that, you remove 100 out of it, out of the knock that we put, and India were all at sea. Um, and um, and you're putting that single slight chance also at risk if you are delivering a track which is either way too pace friendly or way too seam friendly. You put a pace friendly track out there, they'll put a Markwood and a James Anderson to work. You put a spin friendly track there, we've seen that, thankfully Jack Leach wasn't there.
But you put a spin friendly track, and they came here with the intent to play three spinners, and that I think was England's subcontinent baseball approach. To just come in with three spinners at you, took so many people by surprise. But I think that was the aggression that they wanted to show on wickets like this. So India is caught. You really can't go forward. You can't come back. So I really don't think they have a game plan here. Yeah. So the important thing for them now to do is put a wicket in place where they can be a bit of runs, where they can be a bit of something, and make do. It's more like a make do wicket where you kind of hedge your chances. I think I don't know what's a better word to use, but it's you're literally hedging your chances here. You're not really sure about one particular thing that's going to work in your favor. Like there was a time, when you knew that your batting is going to come good, and you said, "Let me out bat the opposition." Or you knew that there was a time when you knew rank turners would help because you had the kind of batters required to kind of see the challenge through. Right now, you don't have that. You really don't have that. And by the way, if you have spinners, and in the absence, especially in the absence of Jadeja, well, they also have the same arsenal to counter. Yeah. So, see, Srini, these kind of wickets are providing them enough reverse swing. So, do you think going forward this could be the series between two Jays, Jimmy and Jasprit, and both the players who are very fragile with their body, and as you talked about his workload management, do you think pacers could also be, especially these two players who can take wickets out of nowhere? It will depend on them No, with the reverse swing. listen, Kanav, the thing is, no, is it Pacers or is it Bumrah? Is it Pacers or is it Anderson? So I'm saying that there is a difference there. There is a difference in terms of, the quality of that person out there. It's not just about some individual. It's about a particular individual and what he's achieved. Like so you put a Siraj on this wicket, and I don't know if you would have probably looked at the same amount of results. So it is the individual who's making the difference out there, right? So I think that's the point. Somebody special has to come in there and single-handedly change the course of the proceedings for India to make a comeback. So there's a difference there. So going forward, if you're going to ask me, pacers in a general way, general manner of speaking, or a particular pacer and what he can do, that's the whole difference. So that I think again, it's about the team management being, how sure the team management is in terms of how they want to approach the coming test. Do they see Jasprit Bumrah in the right frame of mind to continue in the next test match and again single-handedly take the kind of workload that he took in this test match? If so, please go ahead. If not, hedge your chances. Kind of play it safe. See what kind of options are available. See, remember, what's the time gap? I think there is almost 2 weeks, right, between this test match and the next one. Yeah. Yeah. 8 So you days have a plus lot of one, time no, to. 9 days. There you go. Oh, there you go. 9 days. So you really have a lot of time. You have a lot of time to prepare. And then to kind of understand what combination that can go with, and what your strengths are. So I think you just got to listen to yourself. That's about it. Yeah. And Taus, I asked Jamie about the key positive takeaways for the Indian team. To you, I'll come with those specific areas you think India needs to iron out before they announce their next squad and they go into the third test in Rajkot. वो अगर आप pinpoint कर पाएंगे, these are the major key areas that India needs to rectify before going into the next test. Absolutely. I mean, going into this, श्रीनी भाई का क्वेश्चन आगे जो आंसर है इसको आगे आई वांट टू टेक दैट फॉरवर्ड अबाउट द विकेट. आई मीन right now India needs this kind of a wicket. This is where India has most of their chances to win. So if you put out a track which is like viciously turning, they have their spinners. If you put a little bit grass on this kind of a track, then you have a James Anderson and Mark Wood coming in and finishing your top order till the tail. तो आपके पास इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है. एंड दिस इज द ओनली टाइम विकेट दैट कैन सर्व यू एज give you a chance to come back, bounce back, take a good start, get those wickets through Jasprit Bumrah and Ashwin and Kuldeep. This is the perfect wicket. While talking about the areas that we need to work upon is definitely partnerships.
starting from Rohit Sharma and Yashasvi Jaiswal. I mean, see, for example, Yashasvi can give you as an individual again. It was all individual show. If Yashasvi wasn't there, out there, it would have been very, very difficult. So you need some good partnerships from the top order, followed by the middle order. I mean, you need a good number three. Again, Shubman Gill. How consistent this guy will be. I mean, this time in the second inning, he was playing for himself or the team. I mean, good that he was playing for the team. Luckily, uska bhi knock अच्छा लग गया, and it was scratchy initially before he became confident. I hope this because now this knock gives him solid confidence before the next match, and he produces another 50. I'm not answering more. I want him to consume more balls out there. I want him to spend more time as number three because it's a very crucial batting position. रोहित शर्मा आउट हुए, वो अपने स्टाइल में खेलते हुए, तो इमीडिएटली द बर्डन विल बी ऑन दिस गाय शुभमन गिल. सो आई वांट हिम टू प्ले लाइक अ टिपिकल Cheteshwar Pujara in the initial onwards. Good solid defense before he has that what do you call strokes to capitalize on the slow start. But यार वो एक करना पड़ेगा. Number 3 followed by Shreyas Iyer का एक problem है, that is something which is continuing. I hope विराट कोहली, एक सवाल था शायद विराट कोहली वापस आएंगे कि नहीं, एनीबडी नोज क्या होने वाला है थर्ड टेस्ट मैच में. इफ ही कम्स बैक इट विल मेक डेफिनेटली अ गुड ये. व्हाइल बॉलिंग की बात करें तो अनदर शिखर भरत might be he was decent behind the wickets. एक स्टंपिंग भी छोड़ा, but then you have to be accurate. आप विकेट कीपिंग के लिए लिए गए हो भाई, विकेट कीपिंग ही तो सॉलिड करो एटलीस्ट. बैटिंग नहीं कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन नहीं है, but then you have to come up with that. तो अगले मैच में तो मुझे लगता है कि they'll go with that confident guy ध्रुव जुरेल, उस पे ही दिखाएंगे कॉन्फिडेंस. But then some areas that need to work on bowling is यार कैप्टेंसी के साथ साथ, कैप्टेंसी जहां पर डिफेंसिव हो रही थी शुरुआत में, उसके साथ साथ अवेयर होना है, शार्प होना है, ऑब्जर्व करना, अटैक करना है कैप्टेंसी में. रोहित शर्मा बोलिंग इज वन एरिया. लाइक ब्रिंग इन कुलदीप यादव, वो एक इशू रहेगा नेक्स्ट मैच में किसको खिलाना अगर आप चेंजेस लाएं. कुलदीप यादव, इफ रविंद्र जडेजा इज बैक, that will be an issue, one issue that we need to sort out. Akshar Patel or Jadeja or Kuldeep. It depends on the availability. No. No. Before we go to something else, Shini, actually, I'll take one question for you from the audience. I'd like to request my producer Rick Vishai saying, "Kaisa sir, please bata do Kohli next match mein aayenge ya nahi? Any info?" Shini, do you have any info about Virat Kohli? No, I really don't. I have no idea whether he's coming back. See, I'll go by the statement. BCCI said he's missing the first 2 matches. So, as of now, I will just go by this. Why should I speculate? Maybe right now, if BCCI said he was missing first 2 matches, that means he's going to come back for the third one. So, I'm assuming as of now, he's going to come back for the third one because no separate statement or no different. And right now, I'll assume that I'll go by that statement. So, he should be coming back for the third test. And in that, I think is again, India can look at the comeback very positive because it allows you to kind of put your basic strengths back in place. Your number 4 is back. KL, I think, is going to come back to the third test match. The injury was not very serious, so he's going to come back. So that bolsters your top order once again. And I think with this victory, is going to give you the kind of confidence that you require. Going into the third test. And the most important, so I was listening to the Akshar Patel or whatever. See, my point is very simple. It's very clear that this spin attack, Ravindra Jadeja, what exactly was he bringing to the table? And in my opinion, which I've been saying this for a while now, is that it is the pace in the air that he delivers is where it all makes a difference. The precision and the pace is where it all makes a difference. You have a rough patch. Let's say there is Kuldeep bowling from one end, the same end as Jadeja. Okay, what is the difference? Where is the difference here? Is that Jadeja, what he's doing is he's faster in the air, and that rough patch. He's very precise in terms of where his ball is landing, and I think that is what is making all the difference. And that's what makes Jadeja so special when bowling at home. And time and again, he's been pretty successful at what he delivers. As against anyone else, who's so with Aksar, again, you have that pace in the air, but I think what is missing is probably he's not as precise and not to the on the dot the way Jadeja is. I think that's where it makes the whole difference. So
I really don't know how. If these guys think that spinners are going to play a role in the next match, then they really need to sit down and take a look at whether the same set of bowlers can deliver for them. I think if you're going to think spin without Jadeja in your ranks, you're going to struggle. Yeah, so if you're going to think spin, you need to think with Jadeja. So again, you got to think about it from that perspective. I don't know what his injury status is. I've not read anything. I'm sure there might be reports on it. I haven't heard. Has he gone to the NC? I'm not sure. He gone to the NC. Yeah, Jadeja has. If I'm not wrong, So Jadeja if he's has. gone to the NCA, then I doubt it's a smaller injury. Then I doubt he's going to make a comeback ASAP. Let's hope for the best. But again, my point is very simple. If you're going to think spin going into the next test match, you better think spin with Jadeja available, not with him. Being- And yeah, that's about. Otherwise, go for another sporting wicket. Perfect. Thank you so much, That'll be Srini, for connecting with us. thanks. Thank you so much for giving your inputs. We'll see you other time. Yeah. Now we'll come to Jimmy. अब थर्ड टेस्ट से पहले स्क्वाड अनाउंसमेंट है. पहले 2 टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ का नहीं हुआ. A lot of names, as Srini also mentioned, Virat Kohli, KL Rahul might come back. Let's just say I'll put it out there for all three of you. Kohli and Rahul are coming back. What's your top 6? Who sits out from the current betting order? So I'll start with Jamie, then I'll come to Soumya and Taus. Look, I mean, रजत पाटीदार ने खराब तो कुछ नहीं किया, बड़े रन भी नहीं बनाए, शुरुआत मिली पहली इनिंग्स में, loose dismissal, but again, how harsh will you be on someone who's playing his first test match? Right now, brilliant catch in England's first innings, the most pivotal run out of the series yet, but the point is कि पिछले 12 पारी में श्रेयस अय्यर की बैटिंग एवरेज 17 का है, and he's not got past 35. I think you all know that run out has got him one more match, but कायदे से उसको बाहर जाना चाहिए. There's no point repeating, we've discussed through this whole series what's wrong with him. कल तो मैंने उसकी उतार दी उस short selection में. If Virat Kohli does come back, I personally would want to see Shreyas Iyer go out, just because देख चुके, right? चलो शुभमन गिल, we'd written him off. I was the most vocal on this show saying कि भाई इसको नहीं खेलना चाहिए, और ये मैं सीरीज से पहले बोल रहा हूँ कि 2 टेस्ट मैच देख लो और फिर कॉल ले लो. All said and done, he got 100. This guy's not done anything. Should a run out get you one more test match? I think all 4 of us can acknowledge कि नहीं. But something about the way he did it, his reaction, I think he's playing. So बिचारा पाटीदार out. That's what I think. I don't want it, but that's what's going to happen. And then Sher moves to 5. But then if KL Rahul also makes a comeback? See, actually, ideally, if you had phrased your question slightly beyond top 6, I would have said, भैया जो मैं वही कह रहा हूँ, सिराज ने दूसरे इनिंग्स में, इंग्लैंड के दूसरे इनिंग्स में हैदराबाद में 7 ओवर डाले, इस भाई ने 5 ओवर डाले. And going forward, I was looking at the stats because I really want to discuss this in some other show. Stats बताते हैं कि पिछले 3 साल में जो भी आपने पेसर खिलाया, मैं मोहम्मद शामी को जोड़ रहा हूं उसमें, मैं बुमराह को जोड़ रहा हूं, ये लोग सेकंड इनिंग्स में बहुत कम ओवर डाल चुके हैं. Why are you playing a second pacer, right? If that second pacer is, I don't know, who's the most upcoming fast bowler now, यार? Forget India. I don't know, जो कोई है, अगर ये कोई रॉ टैलेंट है, खिलाओ उसको यार, कुछ जरूरत नहीं है यार. क्या 2 इनिंग्स में 12 ओवर बिटवीन 2 पेसर्स, इज इट रिक्वायर्ड? एंड वी ऑल नो कि अगर ये टर्निंग ट्रैक होता तो बुमराह भी 8-9 ओवर कम डालते. आई जस्ट डोंट थिंक यू नीड अ सेकंड पेसर. यू वांट टू प्ले विराट कोहली एंड अय्यर एंड पाटीदार एंड शुभमन गिल, बी माय गेस्ट यार. लेकिन एक चीज तो मुझे साफ पता है, जो भी ट्रैक्स हो, 3 टेस्ट मैच बाकी है, लिख के ले लो, दूसरा पेसर का योगदान तीनों मैच में नहीं होने वाला है. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड इनिंग्स. यू माइट गेट 2-3 विकेट्स इन धर्मशाला डे 1, बट यार रांची कोई विकेट है? रांची इज अ बैटिंग ट्रैक यार. वहां पे साहा ने सेंचुरी लगाया, रिद्धिमा पुजारा गॉट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टेस्ट इनिंग्स देयर. आई थिंक पीटर हैंड्सकॉम्ब गॉट 100. रांची में तो रन आने वाले हैं, बट दैट डजंट मीन यू प्ले अ सेकंड पेसर. He's not going to bowl you more than 10 overs in the second innings, which to my mind is
utterly pointless. May as well play another batsman. Play Washington Sundar. He'll give you 5 overs per day also. Yeah, that was going to be my next question. If you play a proper batter in place of the second pacer or Washington Sundar, because if a batter comes in, then you can have the likes of Rahul, Kohli, and Iyer in the same 11. If you replace Bilkul. the second pacer Bilkul. with him, Soumya, what will you do? Will you have all the three batters at the names I mentioned? If let's just say if Kohli and Rahul are coming back, Iyer, Kohli, Rahul, Gill, the openers, and Iyer in place of the second pacer. For me, Iyer and KS Bharat should walk out. Okay. It's enough. Yeah. If you and already if you have someone like विराट कोहली and KL Rahul at your disposal, 4-5 नंबर आपका वैसे भी शॉर्ट हो जाता है, तो श्रेयस अय्यर की जगह वैसे भी नहीं बनती, आपको कीपर तो चाहिए ही ना. कीपिंग किससे कराओगे? KL Rahul won't keep in this kind of condition. Should not. क्या करना चाहिए अगर ये डिसाइड हमारे हिसाब से होता तो 2 ट्रॉफी नहीं हारते हम. लेकिन he shouldn't keep, right? Play him as a pure batter. Have a Dhruv Jurel in. Just give him a clarity, boss. For the next 3 matches, you are our go-to keeper. इसके बाद आप फ्यूचर इसके बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन 3 मैच के लिए you are our keeper. You have to perform with the bat. You have to perform the role that Rishabh Pant has been performing for us. Accelerate. Just try and accelerate. 35, 40, 50, 100, 150, 200 जितना आप देते हो, that is not a concern. Don't throw away your wicket. Take your time. जो आप टाइम लेते हो, लोगे अगर थोड़ा बहुत तो लो, लेकिन you have to a bit aggressive, थोड़ा सा, so that we can add on quick runs. जैसे Pant helps you out in adding runs. Okay. So for me, Rohit Sharma, you will have to have him, because अगर फॉर्म की बात है तो he should be the first one to step aside. बट ठीक है, कैप्टन है, रखना पड़ेगा. रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, Shuman Gill, I will still have him because of course he's coming. He's scored 100 now. You can't really ask him to sit out again now. Then obviously Kohli at 4, KL at 5, and I have a Dhruv Jurel in my 11. I will play him. I will like to play him at 6. And then if you want to play everyone, including if you want to play 4 spinners, a pacer, that is a different case. Two pacers, 3 spinners, that's a different case. But I will have first 6 batters for me should be these 6 for me. Yeah. Give a chance to Dhruv Jurel. It's high time, boss. KS Bharat was very good in the first game. Now he is fumbling. He's leaving stumpings. He dropped a catch in the first game or the second, if I'm not mistaken. बेन फोक्स भी तो उसी ट्रैक पे कीपिंग कर रहा ना यार. 2 कैचेस लिए उसने, एक पहले इनिंग में, दूसरे इनिंग में. रजत पाटीदार की अगर हम 10 साल के बाद स्कोर लाइन उठा के देखेंगे उनके डेब्यू की, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि बॉस उसने अच्छा नहीं करा, ये इंप्रेशन जाएगा. उसने अच्छा क्यों नहीं करा, दैट इज अ लॉट ऑफ अ डिस्कशन कि वेन फोक्स ने उनका कैच लिया सेकंड इनिंग्स में. सो ही जब भी वो बाहर उतर के आए, वो कंफर्टेबल दिख रहे थे टू प्ले एट द पोजीशन. इट इज जस्ट दैट उनका पोजीशन अभी बन इसलिए नहीं रहा बिकॉज यू हैव प्लेयर्स, लाइक वो ऊपर से लेके 6 नंबर तक प्लेयर्स आपके पास हैं. दैट इज द ओनली रीजन, राइट. जैसे वैकेंसी क्रिएट होगी वो फिर से वापस उस 11 में आ जाएंगे. तो यस, इफ केएल एंड विराट आर देयर, दिस इज माय 6. एंड बट या, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोसेस गोes around the team, I don't really understand. That's something we'll have to wait and see. डिस्कशन डिफेंसिव भी नहीं है यार, ये वियर्ड डिस्कशन, ये वियर्ड अप्रोच है. मतलब एक डिफेंसिव अप्रोच आपको समझ, आपकी डिफेंसिव अप्रोच फील्डिंग में हो सकती है, बॉलिंग में हो सकती है, बैटिंग में भी है, अंदर आप पवेलियन में जाते हो तो भी है, बाहर आप बात करते हो वो भी डिफेंसिव अप्रोच है. आप अजीब सा एक वियर्ड सा एटमॉस्फेयर है. कैप्टन आते हैं, वो स्टंप माइक पे कुछ बोल देते हैं, पीसी में आके कुछ बोल देते हैं, वी आर ऑल लाफिंग, हा हा हा, टू हाउ एंटरटेनिंग. अरे यार, it's all over the place. And we'll have to wait and see. Rohit, now that India has been also after the match and Rohit Sharma comes for the press conference. I'll make a very bold statement before you move on. टेस्ट मैच आप जीत गए, एक बराबर कर दिया है. कॉन्फिडेंट में अभी भी नहीं हूँ इस सीरीज को लेकर के. And I guess Jamie would understand. I don't think India भी होगी. Yeah. I don't think India खुद भी होगी, but yeah, we'll come to Taus. But उसके पहले I'd like to tell the viewers, Jasprit Bumrah is
the player of the match. सवाल था कि यशस्वी जायसवाल, Jasprit Bumrah was. I think all four of us agree that Jasprit Bumrah is the correct player to get the player of the match, and he deserves, as sports fan is also saying, Bumrah deserves man of the match. Without him, we weren't winning this one. And it could also be the turning point of the series. Turning point of the match कह रहे थे, but I still believe it can be the turning point of the series if India goes on and does well. Taus, your top six. We have heard Jamie and we have heard Soumya. Let's just say Kohli and Rahul are coming back. What's your top six? यार पहले तो बुमराह को जाके शेयर करना चाहिए मैन ऑफ द मैच जायसवाल के साथ, बिकॉज बोथ डिजर्व यार. व्हाट बैटिंग एंड अमेजिंग बॉलिंग. एंड सौम्या यार इतना भी उदास मत हो, अभी है टाइम 8 हफ्ते तो 8 दिन, तो आप कम ऑन. नहीं, सी ऑब्वियस चेंजेस रहेंगे यार, ऑब्वियस चेंजेस. अगर केएल विराट आ गया, केएल आ गए तो पतिदार बाहर. और कौन है एक और बैट्समैन? अय्यर. हाँ सरफराज बाहर यार. एक रन आउट पे आप, हाँ दैट वाज अ सुपर रन आउट, एब्सोल्यूट. आई मीन दैट वाज, बट वो आता है रेयर ओकेजन पे आता है. आपको एवरीडे यू वोंट सी अय्यर कमिंग आउट विद दोस one hand throws, and then Ben Stokes struggling to reach, and then he won't jump every day. कभी ना कभी तो ऐसा हो जाएगा कि पहुंच जाएगा. तो एक रन आउट पे कुछ नहीं होता एंड एक डिसमिसल पे कुछ नहीं होता. विराट कोहली भी उतना शार्प है श्रेयस अय्यर के तरह कि मतलब अंडर आर्म थ्रोज कर सकते हैं, कैच भी उमदा पकड़ते हैं. केएल राहुल भी अच्छे हैं. सवाल मुझे सिर्फ, और ध्रुव जुरेल को ऑब्वियसली आना चाहिए, और रोहित शर्मा भी वाइज है, राहुल द्रविड़ भी वाइज इनफ है, खेला इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उनको पता है कि श्रीकर भरत कॉन्फिडेंस में भी डाउन है, विकेट कीपिंग में भी डाउन है और बैटिंग में भी डाउन है. तो अनफॉर्चुनेटली ये सीन है उनका. तो आई थिंक दे शुड गो विद अ यंगस्टर. आई वुड हैव प्रेफर्ड यार ईशान किशन को लेना चाहिए था भाई. ईशान किशन वुड हैव प्रोवाइडेड यू दैट फायर पावर इन द बैटिंग लाइनअप. आई हैवंट सीन ध्रुव जुरेल मच इन टेस्ट क्रिकेट, लॉन्गर फॉर्मेट. T20 में तो किया उन्होंने, मगर कितना मैचेस खेले हैं, बट दिस गाय हैड मोर एक्सपीरियंस. क्या लफड़ा है मुझे पता नहीं, आज तक समझ में नहीं आया कि इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, कि डिसिप्लिन इश्यूज. दुबई चले गए, Different door. Taus bhai, that's a different door. We दुबई चले गए तो परेशान कर दिए. बट देन आई वुड हैव प्रेफर्ड ईशान किशन. बट अब ध्रुव जुरेल है तो उनके साथ जाना ही चाहिए, एंड यू हैव नो ऑप्शंस. स्पिन अगर ऐसी ट्रैक रख रहे तो यू डोंट नीड अ फास्ट बॉलर, सेकंड फास्ट बॉलर एज वेल, क्योंकि आपको बुमराह जिताएंगे. 3 विकेट तो कम से कम निकालेंगे, या 2 विकेट मैक्सिमम, और बड़े विकेट निकालेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो टेल एंडर्स का, जो ज्यादातर आपको स्ट्रगल स्ट्राइव कराते हैं बल्लेबाज गेंदबाजों को, वो है टेल एंडर्स. वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है. जब आपके पास एस्टैब्लिश बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर है वो करे तो समझ में आता है यार, दिस गाय इज लाइक ही इज अ टॉप ऑर्डर, ही डिजर्व्स टू स्कोर एंड ही हैज द एबिलिटी. वो फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता. बट जब आपके पास जो होता है टेल एंडर्स सामने से आके परेशान करते हैं, आपको आउट ही नहीं होते, उतना ही स्ट्रगल करते हैं, और उतना ही बॉल जब बीट होके जाता है और जब निक नहीं पाता है, गैप नहीं मिलता है, तो फ्रस्ट्रेटिंग होता है. तो उधर ही काम आते हैं जसप्रीत बुमराह. तो यू नीड ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह, यू डोंट नीड मुकेश कुमार. सो यू कैन गो अहेड विद रविंद्र जडेजा इफ ही रिटर्न्स. अगर वो नहीं आए तो वॉशिंगटन सुंदर इज अ बेटर चॉइस. मतलब सी आपको विकेट क्या मिलने वाली, ग्रीन ट्रैक, तो ग्रीन टिंज भी नहीं रखेंगे, हल्का सा घास भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हल्का सा भी घास रखे तो दोनों खत्म ही कर देंगे आगे माकूड और. But your top six is Iyer and Patidar in place of Kohli and Rahul. Yeah, absolutely. I mean, there is no debate at all. अगर ये दोनों वापस आ गए तो टॉप 6 की डिबेट ही नहीं है. I would have loved to see सरफराज खान bat, but then अगले दिन आप अगली सीरीज कीपर किसे खिलाओगे? कीपर किसको खिलाओगे? ताउस भाई कीपर ध्रुव जुरेल ना, ध्रुव जुरेल. I would prefer, honestly, I would prefer रोहित शर्मा to be dropped, क्योंकि ये बंदा सिर्फ फॉर्म में नहीं है, वो स्ट्रगल भी कर रहा है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बैटिंग हो रही है, कैसे करना चाहिए. तो उससे ज्यादा कन्विंसिंग तो मुझे यशस्वी जायसवाल कर रहे थे. केएल राहुल who had opened the innings against Australia, तो he can come and open the innings, और इधर एक और स्पेस मिल जाएगा आपको, तो बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. रोहित शर्मा की वजह से थोड़ा बैटिंग टॉप ऑर्डर वीक लग रहा है. हजारों ख्वाहिशें ऐसी आपकी दाऊस भाई. रोहित शर्मा, आई वुड लव हिम टू कम बैक इनटू फॉर्म यार. रोहित शर्मा की बैटिंग देखने का मजा ही कुछ और है, रोहित शर्मा की बैटिंग देखना. बट देन वो होना चाहिए ना यार, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा मुझे रोहित से, बहुत लूज लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है. चलो another day But I another would debate. go We'll with get to Rohit, the questions absolutely. now. We have Why a lot not, of sir? questions. We have a lot of questions and comments coming in. I'd like to request my producer to
shoot the rapid fire questions, which I request my expert panel to have the rapid answers. Sportsman win against baseball feels like an overseas soil win. Overseas win, let's just say. Jamie, does it feel like an overseas win to you as a fan? एब्सोल्युटली, और होना भी चाहिए यार, क्योंकि इससे इससे गदर टीम नहीं आई बहुत साल से यहाँ पे. एब्सोल्युटली आई एग्री. Yeah, yeah. Next question, please. I love how Jamie gives rapid answers. Yeah, today Rohit will attend the press conference surely. ये तो बिट्टू जी देखना पड़ेगा, and hopefully, yeah, Vineet will tell us. Vineet is there in Vizag right now. We'll connect with him in the evening, and we'll also know कौन आया और किसने क्या बोला. Next question, please. Bittuji saying still a loss by 106 runs only. In the fourth innings, they scored almost 300, but we in Hyderabad lost chasing 230 runs. Do you think in next test matches, toss will be important factor? Soumya, do you think toss will be an important ये factor? ये टॉस से ज़्यादा मैंने पिछले लाइव में भी यही बोला था कि इफ़ यू वांट टू विन द गेम्स, उनको 400 रन का टारगेट आपको देना पड़ेगा. Anyhow, you have to score because they come with a mindset of कि हम लोग chase के लिए जाएंगे, no matter we lose it or not. No matter what the result is. Yes, toss is going to be a very important factor because अगर इस तरीके का ट्रैक है and England are batting first, तो वो 500 भी लगा देंगे तो वो सरप्राइजिंग नहीं होगा. And it was India's collapse, India's horrible batting display. I would say short selection display जिसने आपको 500 रन लगाने से रोका, वरना उस बैटिंग ट्रैक के ऊपर आपका 2 प्लेयर और भी खेल जाते, 200 या 100 भी लग जाते तो 500 के आसपास आ जाते. Yes, the toss will play an important factor, but you have to score a lot of runs against this kind of an England bowling attack. England attack. Yeah, perfectly summed up. Next question, please. एटलीस्ट टॉस में फॉर्म रहना चाहिए ना रोहित शर्मा का. टॉस भाई रोहित शर्मा देख ही ना ले लाइव कहीं. Sports fan, our batting lineup is very inexperienced. We are without Virat, Jadeja, Shami, KL. So this win is a big one. Taul, do you agree? It's a big victory just because we have an inexperienced batting lineup. एब्सोल्युटली, अरे बिग विक्ट्री, मेजर विक्ट्री यार. आई मीन मेजर विक्ट्री. आप किस पे जीते हो? आप यंगस्टर की वजह से जीते हो कि यशस्वी जायसवाल एंड केएल, शुभमन गिल एंड जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स वेटरन, बट देन अगर वो बैटिंग नहीं होती तो नहीं होता ना. तो ह्यूज विन यार, दिस इज ह्यूज विन. यू डोंट हैव विराट, जडेजा, केएल राहुल. आपका मेन लाइनअप नहीं था. आप पतिदार के साथ खेल रहे थे. यशस्वी यंगस्टर है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं. ह्यूज विन, नो चांस. I disagree. आपको मैच उस प्लेयर ने जिताया जिसको 8 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, 9 साल. जसप्रीत बुमराह. That's it. Obviously वो तो काम ही है उनका. बड़ी Difference of बैटिंग बहुत opinion, इंपॉर्टेंट होती है. that's the best thing about debates. There are difference of opinions. We'll move on to the next question here. There's a lot of comments and questions coming in from the fans. Uchul Morre saying Mukesh bowls way too many no balls. Why is he not working on that? Jamie, why is Mukesh not working on his no balls? The worst no baller in the history of Indian cricket is Ravindra Jadeja. So I would rather, like, to me, Mukesh Kumar is irrelevant. Jadeja bowls 5 no balls every test match. I would work on that if I were Jadeja. Mukesh is, in my book, he's irrelevant. वो ना भी डाले कोई विकेट तो लेगा नहीं वैसे भी. Jadeja's no balls are a real problem. Also, do you think, Jimmy, it's right to blame Mukesh here because he, as a player, he's being told to play, so he will obviously. It's more of a fault of Rohit and Dravid because people are barging towards Mukesh why is he playing, why is he bowling like this? But it's to be blamed or on the team management rather. Both ना, he should not be playing is one argument. लेकिन खिला के भी, Soumya just said यार 2 ओवर में 19. I'm saying that's an improvement. First innings he was 2 over 22. Point is जब आप पहले 4 ओवर में 50 रन दोगे, आप किस काम के हो, right? He's being picked, argument 1. After being picked, कुछ तो कर भाई. 24 2 ओवर में 50 रन दे रहा है. That's his bloody fault, not the team management. Why are they picking it? I don't understand. I don't get it. No, all I'm saying is, Ujjwal, no balls are the least of the problems you and I should have about Mukesh Kumar. Let's put it that way. Yeah. Yeah. Perfectly summed up. Next question and or comment, please. Bian Singh is saying, may God give some common sense to his captain and coach, and hopefully they drop one pacer bracket with Mukesh and play an extra batsman, Sarfaraz or all-rounder Sundar in the next match. Soumya, you are shaking your head very aggressively. What's your take on this?
if you want to go back to that approach again, जहाँ आप एक्स्ट्रा बैटर खेलना चाहते हो, तो आप उसी यू आर बैक टू द स्क्वायर वन. Yes, you should drop a fast bowler because a fast bowler से उतना बॉल डलवा नहीं रहे हो, बट बैटिंग डेप्थ को रखकर रोना मत मचाओ. पिक अ प्लेयर हु कैन बोल, हु कैन गिव यू विकेट्स. आप पहला टेस्ट मैच इसी वजह से हारे हो. आप अक्षर पटेल की बैटिंग को लेके गाना गाते रहो, लेकिन अगर वहां कुलदीप यादव होते तो आप 230 चेज ही नहीं कर रहे होते. It would have been under 200. That's the ground reality. अक्षर पटेल ने कोई 150 रन नहीं बना के दे दिया आपको, या पंजा खोल के नहीं दिए. लगता है आपकी कुलदीप कंटेनिंग रोल आपका कुलदीप यादव ही खेल रहा था इस मैच में भी. वॉशिंगटन सुंदर, yes I agree, but वॉशिंगटन सुंदर को आप कहाँ खिलाओगे? If जडेजा is back, I mean, I don't know. You know, स्पोर्टिंग विकेट पे I would still go in with an extra pacer. I won't drop a pacer. अगर स्पोर्टिंग विकेट, अगर आप रेजिंग टर्नर बनाने वाले हो तो आप 5 स्पिनर खिला दो यार, क्योंकि वो काम हो जाएगा. लेकिन अगर ऐसा विकेट है, आई वुड स्टिल गो इन विद अ पेसर. बट ये सरफराज को कैसे कहाँ खिलाओगे? कौन से नंबर पे बैटिंग कराओगे आप? 7, 8, 9 कौन से कहाँ कराओगे? अगर जाडेजा भी हैं आपके पास, और आपके पास अश्विन भी हैं, और आपके पास अक्षर पटेल भी हैं. But if you're still ready to play a pacer if the wicket remains the same, is it Mukesh or is it someone else? I would rather have a Siraj, not a Mukesh. Would rather Bumrah and Siraj in tandem. Yeah, not in tandem, just in the 11 to to give each other a breather. इतना लंबा spell now. Yes. And the rest will be done by my men. Okay. Next question, please. Ujjwal Moria, when will a batter stop throwing their wickets? Tausbhai, when will Indian batters stop throwing their wickets? अरे तो उनको ही मालूम है ये कि विकेट्स कब थ्रो करना स्टॉप करना चाहिए. I mean, obviously, it's irritating when you are, if you have taken a good start, you're not capitalizing on it, or maybe you're just giving away your wickets lightly. I mean, specifically Rohit Sharma types of batsmen who have learned, who have been experienced, kind of batsmen, I would say. Rohit Sharma, experienced batsmen like Shubman Gill, somebody who's been there for a while. यशस्वी तो यंगस्टर ही हैं अभी भी, मगर उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया. तो या ये उन्हीं के हाथ में, दे शुड फील, खुद जाके उनको अपने सामने मिरर के सामने खड़े हो जाना चाहिए कि आज मैंने क्या गलतियां की हैं. तो दे शुड आइडेंटिफाई एग्जैक्टली वेयर आर दे गोइंग रॉन्ग. दे शुड विजुअलाइज, और सिमुलेशन प्रैक्टिस तो होती रहती है उनकी, सिर्फ नेट्स में नहीं करते. तो आई थिंक बहुत सारे जरिया है जिससे आप उस पे वर्क कर सकते हो अपने बैटिंग पे. चाहे विकेट, वो कॉन्सेंट्रेशन भी, वो स्पर ऑफ द मोमेंट है ना, वो आपको कैप्चर करना पड़ता है. जब आप वो एक सडनली एक अच्छी बॉल आती है, या आप ऐसे बॉल पे लालच आ जाती है जहां पे आप थ्रो कर देते हो विकेट, तो वो मोमेंट आपको कैप्चर करना पड़ता है, आपको वो संभल के रहना पड़ता है. मेंटल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये उनके ऊपर है, उनके बैटिंग कोच. अरे विक्रम राठौड़ क्या कर रहे हैं यार? हम यहाँ पर बैठ के फ्री में बताएंगे उनको, बल्लेबाजों को, विक्रम राठौड़ क्या कर रहे हैं. Tausbhai shared his feelings perfectly. Next one is Ankar Biswas saying, out of total 651, 5 extra included, 313 scored in 2 innings out of total 22 innings. Says a lot about our pathetic batting. 313 scored in 2 innings out of total 22 innings. This is a bit confusing to me. Jamie, can you make sense of what he means? Because it's going over my head. ये पहला वाला तो बाउंसर है या यॉर्कर है बुमराह वाला. आई थिंक ही इज सेइंग कि 22 इनिंग्स में 2 बार 300 पार हुआ है. जो भी है, लेट्स, आई थिंक वी ऑल एग्री के बैड कैप्टनसी / नेगेटिव कैप्टनसी, ड्रॉप कैच ऑफ अक्षर पटेल व्हेन ऑली पोप वाज 110, some bowling. Biggest problem is the batting. I think we've discussed this. If you pick up any test series in the last 1 year, जब हम सब मिले हैं, तो common problem is the batting. So, and Soumya was just talking about that literally 3 minutes ago. So I'll go with the last line. It's pretty pathetic. Yeah. Next question, please. Person with so many liabilities in field and without Jadeja, it's hard to drop Iyer, the fielder. Soumya, can you pick a batter on the basis of his fielding? Because his primary job is to score runs and give runs to the team. But if he takes a good catch, if he executes a good run out, is it enough to play him in the 11? I would love to if he's scoring 15 every inning he plays, the way he was doing in the ODI format. I would love to do that. Fielding
डीआरएस के भरोसे भी खिलाना शुरू कर देना, यार ये प्लेयर डीआरएस अच्छा सजेस्ट करता है, लेट्स हैव हिम इन द 11, कोई ऐसा भी निकल के आ जाएगा। हॉरिबल। As it's primary job of a batter is to score runs. If he's not doing that, there's no point. Next question, please. We'll take two more questions and then we'll wrap this session up. Priyan Singh is saying this was Kuldeep's first match after a long layoff. In the next match, he will be more threatening and lethal. Taus, do you agree? ये कब नंबर 1 स्पिनर हो जाते हैं और कब टीम से बाहर हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इनका क्या चलता है। इनको कप्तान कैसे यूज करते हैं। बाहर रहते हैं तो नंबर 1 होते हैं, सडनली एक 3-4 विकेट अश्विन से ज्यादा पा लेते हैं तो नंबर 1 हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। यार ये कप्तान की बात होती है यहाँ पर, कप्तान कैसे यूज करना चाहिए, इनको कितना इंपॉर्टेंट रोल है और क्या विकेट सर्व कर रहे हैं। आपको रोल क्या है, अक्षर पटेल को और जडेजा को सेम रोल देना है या आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला के जल्दी उनको सिमटाना है इंग्लैंड को। और ये इससे साबित टुडे ये मैच एटलीस्ट साबित हुआ कि यार दिस गाय इज डेफिनेटली एन एसेट टू द टीम। आई मीन साबित करता रहा है बंदा अपने आप को, बट देन ये मैच में और साबित हो गया। सो व्हाट एल्स डू यू वांट, आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट कुलदीप टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आप एक पेसर बिठा दो, जबरदस्ती आप खिला रहे हो, 4-5 ओवर करेंगे बुमराह, आप यहाँ से वॉशिंगटन सुंदर को ले आओ, खत्म हो गई बात। जैसे जो रूट इफेक्टिव थे वैसे ही यहाँ से ले आओ, तो कुलदीप तो बना ही रहेगा आपका। समझे? रही जडेजा की बात, जडेजा अक्षर और जडेजा के बीच में वो तो फिर अभी वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। केएल आ जाएंगे आपके पास विराट कोहली आ जाएंगे, तो आपको जडेजा की जरूरत नहीं क्योंकि अक्षर की जरूरत नहीं क्योंकि जडेजा फॉर्म में। तो यार कहीं ना कहीं तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। तो कुलदीप को आपको विकेट्स भी लेने, सिर्फ रन नहीं बनाने। तो विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैच जीतने के लिए। Wickets is also equally important. Agreed. We'll take bowlers. Yeah, we'll take one last question to Jamie and then we'll wrap the session up. Jamie, should India continue with Bharat or look for Julel? I think you have answered this, but still. I mean, look, it's been 7 test matches in less than 1 year. Batting averages 20. I think it's time for Julel. It's time for Jurel. I think this is a perfect statement to end this live with. Thank you so much, Jamie. Thank you so much, Soumya. Thank you so much, Taus, for connecting with us. And thank you so much to all our viewers. We'll connect again with you at 6:45 p.m. with an in-detail discussion of the match, of the series so far, and also of the future prospects regarding the squad and the upcoming matches. Until then, please take care and have a very nice day. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।